Okay. So guys, let's see. We have a topic Office 365. Actually, what is Office 365? Office 365. Correct. So some people are also calling it Microsoft 365. Some people are also calling it O365, and some people are also calling it Microsoft Office 365. So things are same, right? Now things are absolutely same. So actually, guys, what we discussed now on Azure, correct? On Azure, what we discussed, okay, it's related to ask and pass service, right? Now, cloud having a service, ask and pass, okay, and SaaS, three kind of services cloud contains. Any cloud. Okay, if you remember, when you attended a demo session, I have given an explanation on it, right? Ask, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So Azure, AWS means the admin part. The admin part comes under a ask service, infrastructure as a service. But Office 365 is a SaaS cloud, software as a service cloud. Office 365, Google Drive, this all thing is a software as a service SaaS cloud. This all thing is a software as a service, it's a SaaS cloud. Right? Okay, this all is a okay. So Office 365 is a Office 365 is a complete SaaS cloud because on a Azure, okay, we have created a network, storage, VPN, backup, machine. So these all is a part of infrastructure, na? If okay, guys, if I'm talking about infrastructure, what is the meaning? Setup. Okay, combination of storage, combination of network, combination of machine, server. So that we have discussed already. Correct. So that's why Office 365 is basically a software as a service SaaS cloud, which help us to manage users' mail account, their permissions, okay, mail tracing, okay, device management through SaaS cloud, right? So think is guys like, okay, like for Azure, okay, for managing the Azure infrastructure, there is a portal, right? Azure portal, correct now? You have created an account on Azure portal. Like same for Office 365, there is a separate portal. There is a separate portal for Office 365. There is a separate portal for Office 365. Right. Like guys, Azure having a subscription, free trial, pay as you go, right? Like same Office 365 having a license in Office 365, which is E1 generally, okay, generally that company are using E3 and E5. E stand for where E stand for enterprise. So this is a license. So generally organization are now the time preferring E3 or E5 anything. E1 is a very older, correct, very less feature. Now the time organization is preferring either E3 or either E5. So if you want to use Office 365 cloud in your infrastructure, so first of all, what you should do? You need to create account. Create account in Office 365 E3 or E5 anything. You can create account in Office 365 E3 or in E5 in any license. So first of all, how would you create your account in Office 365 E3? Right? Once you have account, okay, because we are going to create a free trial account. Organization using a paid version, right? But for a learning purpose, for understanding purpose,
Okay, we don't need to pay on Office 365. You are paying for Azure, okay, as a pay-as-you-go model, that's fine. But no need to pay for Office 365. So you can create a free trial account. Free trial account in Office 365. How to create free trial account in Office 365? Right. Now, so if you want to create account in Office 365 account, okay, sorry, if you want to create account in Office 365 E3, what is the requirement? Requirement is Outlook account. nothing. Yes. You can create a new account. Simple. As a free trial, ना you are creating. Organization Yes. having already account. कंपनी का तो ऑलरेडी अकाउंट होता है. Yes. आप सीखने के पर्पज से, रनिंग के पर्पज से कि कैसा होता है ऑफिस 65, क्या क्या करना है हमें, आप क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो फ्री ट्रायल. कैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. आई एम शोइंग यू हाउ टू डू so that you can follow same steps for creation of free trial account in Office 65 E3 and for 1 month, like Azure giving 1 month ना, Azure ने दिया था ना 30 दिन का free trial. Right. Like same on Office also on E3 license we are getting 1 month of free trial. After 1 month, if you want to continue with same account, you need to take a subscription as a monthly wise or as a yearly wise, annual wise. But no need to take a subscription, no need to purchase, just run it basic. Okay. So how to do? Okay, I'm showing you everything. So first of all, okay, if you want to get a free trial account, you can write on a portal Office 365 E3 trial. Okay. See, first one you are seeing now, it's for a paid version, but we don't want to pay anything right now. We want to use as a free of cost, right? Just for a running purpose. So there is option here, Office 65 E3. You can click here. You can click here. Okay, I clicked. Right now. Okay, after clicked, you are seeing here, Office 65 E3 is a cloud-based suite for productivity app and services. Organization are paying. Think why now? If you want to purchase directly, you can purchase, but you can click on free trial. Okay, click on free trial. Because first, once the account has been created now, then we can discuss the basic services that people should aware. See, okay, I'm going to click on log out and create a new account. Okay, actually already I have a multiple account on Office 65, right? That's why it's creating a problem for me. Okay, but okay, not an issue, guys. Yeah. So once you will click on free trial, now this page will open for you only. Here you can give your Gmail ID. I'm giving my Gmail ID. Okay, you can give your Gmail ID and any ID. Okay, you can click on next. Now your thing looks like you have to create a new account. Let's get you started. Continue as this account. Click on setup account, and here you can give your name. Okay, this is a process of okay, and it's okay in and okay, and guys, Office 65 as a free trial, no need of like credit card, nothing. Just OTP verification and all. Once you will upgrade it, then it will take a credit card. Okay, something services is different than Azure. So okay, you can give your name, your surname, okay, and then contact number. Okay. Okay, contact number, then okay, company name. Okay, I'm giving company name like okay, eVision TechnoServe PVT Ltd. Okay, I'm giving only eVision TechnoServe. Okay, you can give any name. It's a free trial account now. You can give any name. आप कोई भी नाम दे सकते हो, doesn't matter. Okay, select company size. You can select any size. It's a free trial account. Okay, and then you can click on next. Okay, I will stop the share because I'm giving a contact number here.
Okay, click next. Okay. Then guys, then okay. Then you are seeing what the contact number, okay, I given now. I'm okay. I'm getting option for OTP. Right. Text me or call me. I'm giving text me. Okay. Click on text me. Okay. Send verification code. So what is the number I given now? Contact number. Okay. I will get a OTP. Yeah. Okay. I got OTP. 140899. Okay. I given OTP. I will click on verify. Okay. Now guys see. Now, okay, OTP is verified only. The contact number OTP. Now by default, I am getting this domain name. Evasion Technoserve 970.907.onmicrosoft. You know, .onmicrosoft.com is our by default domain name. Later on, like the way we have added a custom domain in our Azure, na? In a Azure AD, if you remember. Like same way we can add a custom domain here on Office 365. Okay. So by default, this is my user. Okay, as an admin, my username and my mail ID will be Tarun Mishra @evasiontechnoserve 907.onmicrosoft.com. Okay, I am setting a password. You confirm password. Then I will click on next. Okay, I clicked on next, right? Right now. Now, okay, now it's coming. Address and confirmation details. Okay, it will ask the address of a company. You can give anything here. It's a free trial account. आप कुछ भी दे सकते हो. Doesn't matter. Okay, name. Okay, surname, address. Okay, I'm giving address of. Okay, Evasion address E41 Sector 3 Noida. Then city or town, Noida. State. Okay, you can give anything. Okay, I'm giving a right information about a company. You can give anything. Okay, and then you can click on next. Then you can click on next. Okay, save. Okay, now okay, after giving all the details, now it will ask guys see, give a company tax ID or PAN registration number. Like guys, every person in India having a PAN card who is 18 plus year old, right now. So having a separate PAN number, na? So what is the PAN card I have having a okay different number? What is the PAN card you have having a different number? You know, like same guys, every organization having a PAN number. Every IT organization, the organization who is registered in a government, na? Okay, with a government database and all, having a PAN number, having a GST number. You know, every company having a GST number, a PAN number. So you need to put here GST number, but it's a free trial account. So you can, okay, you can give ABCD 1 2 3 4 anything. You can give your name like Sumit 1 2 3 4, Manikant 1 2 3 4. Okay, it's just like a formality there because it's a free trial account. Organization having already account and there is a correct account. So there is a valid account. Click on save. Now guys, account created. Okay, this is the last step. Now account will create. The right thing. My username is, your username is this one. Correct? I got this my username. You can click on get started.
Okay, account created. Now we are going to use this account for managing everything. Let's see how to manage. Yeah, click on, okay, guys. Now see, if you want, you can install a office, you can add a domain, you can add users, you can connect to domain. If you want, you can add, organize, okay. The way to add a domain is same. You can click on continue. Right here, you can add a domain. Right now, what is the domain you have? Correct. So I have a domain right now in my GoDaddy. You know, that one domain I can add here. That one domain I can add here. But I'm leaving it by default. I'm going with a by default username. Okay. Because guys, there is the same way. You will give a domain name here now. Then you need to enter that txt text record on a GoDaddy. Just like the way you have added a domain in a Azure AD. Okay. I'm leaving it by default. Correct. You can click, okay, and directly you can click on this option here. See, here, click on admin. So that you will get an admin portal. Admin. Guys, this is a Microsoft 365 admin portal with E3 trial. Right. And here you are seeing, okay, the company name I given the same. Okay, install Office. Office has been installed, means Office package is inbuilt here. Okay, I went added a domain. That's why it's okay, it's not showing a green color like this, like a here. यहाँ पे green color नहीं show कर रहा है. Okay, so this is the admin portal of Office 365. And here, basically, we need to run two things. हमें दो चीजों को सीखना है यहाँ पे. User management, okay, user and device management plus Exchange server. Plus Office 365 is also having a feature of Azure AD. Office 365 also having a feature of Azure AD. Okay, how? I think here you are getting a normal, na? Home, users, team, group, you know, na DL, GAL, distribution list, GAL, global address list. So these all is a features here. You can click on show all, and here you can see things: Azure Active Directory, Exchange, compliance, security. Lot of options here. Basically, okay, if you have a knowledge on Azure AD with Office 365, okay, in Office 365, Azure AD having the same feature like Azure AD in Azure, MFA, SSPR, user password reset. So that's why. Then Exchange, we'll discuss it later. Correct. So we'll discuss about Azure AD with Office 365 plus Exchange later. Now let's move to a basic services. पहले हम चलते हैं basic services. You can click on users. You can check active user. This is a different account, I think. Yeah, this is a, just a minute. 907, no? This is okay. This is a different account. Okay, yeah, this is a different account. I can log in with. Okay, just a second. Yes, this is a different account. Okay, I can log in with which account? 908. Okay, because I can log in with this account at the rate. I can simply copy now, right? From here, I am going to copy. Actually, a lot of account of Office 365 is logged in my browser for a multiple stations. So here I can paste. Now actual account is going to be logged, right? Which I have created right now. Yeah.
So now this is a okay. Now I can check account details. 907. Okay, perfect, perfect. Okay, now guys see. So in a so all you are able to see Azure AD, Exchange, compliance. Compliance means same compliance with Azure. You know na policies and all. Initiative definition, policy definition, that you want to apply a policy for users to not use to use a virtual machine only, right? And RBAC, role-based access control, also inbuilt with Microsoft 365, Office 365. So let's go with a basic service firstly. Users, click on active users. Check how many users are active. So see, this is my account not only, right? This is my account as an admin. ये तो मेरा account है सिर्फ ना as an admin. And guys, we are using a free trial. Correct. So in a free trial, we are getting total 25 license in free trial. Means I can create 24 more users here. I can create 24 more users, and for that one users, I can assign them a license, user license, so that that one user can use Outlook and whatever application while staying online. Right. So guys, first of all, inactive users. Okay. So first of all, we are going with the first practical we are going with, because we are going with user management. Okay. How would you manage a user management with document management? With document management means guys, means if any user is using Excel, Word, PowerPoint online, so that one user can share a document with anyone, correct? With every people. So how would you manage a user? What is the process of user management and the document management? Firstly, which is a basic, correct? Then we will discuss. Okay, after that, we will discuss about mail management using Exchange server. Yeah, there is a global certification also. There is also global certification for Office 365, which is MS 900, which is MS 900, correct? I did this certification already, but it expired actually. I did it on a thing, Microsoft Office 365 fundamentals. I did this thing. Okay, I think in 2019 of September and no 2019 October I did this certification. Certification, obviously certification not required for you right now. Once you will reach on a senior level now, on a infrastructure management, on that time you can plan. Now you can focus on knowledge on the. Okay. So guys, when we are talking about, sorry, when we are talking about user management with document now, document management with users and all. So first of all, okay, this is my account now as an admin. So what I will manage for my account? I'm the admin. I want everything permission, right now. मैं admin हूँ तो मुझे सब कुछ permission चाहिए ना, correct? For example, in a company there is a user enter from any department, sales, finance, whatever, correct? And okay, and the first work that you will get to assign them mail ID okay, to create a mail ID in your Office 365 portal and to give mail ID and password to particular user. So how would you give? First, you can add a user. Add a user. Okay. Here you are seeing first. So for example, in my case, the username is Manikant. As an example. If you want, you can put a last name. Display name, you can give same Manikant. Okay, username you can give. Okay, I'm giving okay username Manikant dot IT. Okay, Manikant dot otherwise sales. Depends upon the company
requirements, okay, username and all depends upon company requirement and there. So I'm giving Manikant.sales in a domains same. Then automatically, okay, create a password. No, I want manual password. I will say it. I want manually password. Okay, I will say it. Okay. So depends upon your organization, working process, how, okay, from previous time, okay, your company is going on, their working process is going on. Depends upon that. Okay. So I given right now. Okay. Then require this user to change their password when they first sign in. What you want? That this user will be able to change their password when they first signing. I want no. I want no. Send password in email upon completion. Yes. I want what is the password of this user now in my mail ID as an admin. In my mail ID, their password will be sent. Otherwise, okay, otherwise I'm giving another mail ID. In this mail ID, I want this user password will be sent. Right. So that if okay, if in a future I okay, okay, if the user forgot a password, so I can give him password. I can reset as well as, but depends upon your requirement. So these all things, click next. Now you are seeing assign product license. See, so you can select location. Locations will be near to the user. User belongs to which location? So, okay, I know that Manikant is a user is in India. Okay, in a Mumbai, in a Pune, any location. If Manikant user will work on US, I will give US location. Give the location near to the user and all. Right now, like same with Azure, na, we are giving a reason on Azure as nearby the user location. So I'm giving India. Now, guys, you are saying assign user a product license. Correct. So you are seeing 24 or 25 license available. And as I told you, total we are getting 25 license in a free trial. Correct. And 24 license are free here. Total we are getting 25 license and 24 license are free. Think. Total license 25. Okay, in a free trial. 24 are free. Why? One license assigned for my okay. Okay. One license is okay assigned for the user that I'm using. Right now. Correct. I can click on here. You will see. Now it's okay. Now it's 23. Why? One license I'm assigning to Manikant user. If I will not assign a license now, what will happen? Manikant will not be able to use Outlook, Word, PowerPoint, anything on portal, on browser. Okay, like I want that Manikant will write outlook.com. Okay, Manikant will log in with their mail ID and password, and Manikant will use their mail. I want this. So that's why I need to assign a product license. Right. Create user without a product license. Okay, not recommended. Basically, we are always assigning a license. Then you are seeing by default, this user having a okay, access of this or application. Azure Right Management. Okay. Exchange Online. Correct. I want this user will not be able to use some application like okay, like Microsoft Teams. I want the okay, the user will not use. Generally, we are not doing. So you can give a permissions and all if you want. Then you are seeing roles. What is the roles you want to assign? So so Manikant is a normal user from the sales and any department. Okay. So there you are seeing no administrator roles. If you want to give any admin role, like if you will give any admin role, like Manikant is a help desk administrator. So what Manikant can do? Manikant can reset password and can re-authenticate for all non-admins and some admin roles. Manage service request and monitor service health. Okay. If Manikant is a help desk administrator, so I will give this okay as a now global admin.
I will give this permission. If I will give Exchange administrator, so Manikant can only use Exchange service. All the user, SharePoint, all the service will be disabled for Manikant. Manikant will be only able to use Exchange. But I don't want to give any admin access. Manikant is a normal user. So I'm clicking on user no admin access. Guys, your roles is same as Azure. जो Azure में रोल था ना, यहाँ भी वो सेम रोल है. You will do it according to your requirements. और भी बहुत सारे roles हैं. You can check here. Lot of roles, बहुत सारे roles. Okay. Sorry. Yeah. Okay, you can check. Like Exchange administrator, authentication policy administrator. Okay, means any user can give, okay, password protection policies can create. देखो, think how many roles. The devices, Intune administrator, printer administrator, okay, Microsoft 365 administrator, cloud device administrator. So you can give role global administrator, okay, application administrator. So roles is lot of, देखो कितने सारे roles हैं. Read only. Okay, so I'm not giving any admin role. I'm giving a normal user role. Next, then finish adding. In this way, Manikant user, okay, created, right? Click on close. So this is the Manikant mail ID as well as ये Manikant का mail ID भी है. This Manikant username plus mail ID, right? Okay, guys, see now how Manikant will use Office application online. अगर Manikant को use करना अपने Office के application को, तो वो कैसे use करेगा? Simply, okay, I'm opening in a incognito mode. Manikant, okay, for example, Manikant want to use Outlook. Manikant will write, okay, write outlook.com. Then enter. Right, and now Manikant will log in with their mail ID and password. Right now, because as an admin, I will share the mail ID and the password of Manikant. Okay, to Manikant, right? मुझे Manikant को क्या शेयर करना होगा? पासवर्ड वगैरह शेयर करना होगा. Okay, click on sign in. And here, see, मैंने क्या किया? मैंने, okay, I just copied a Manikant mail ID. Okay, click on next पे click कर दो. Okay, now Manikant will give their password, right? Manikant having their username and password. Manikant is giving a password. Signing. Now, guys, Manikant got success. Okay, Manikant will be logged in Outlook. You're saying outlook.office365.com. So in this way, Manikant user who belongs to a sales department got logged in. Seeing? That's clear. It's a Manikant. You can check. Right now. Right. And Manikant can also use what? Manikant can use SharePoint as a user only. Manikant can use Teams, Microsoft Teams as a user. Manikant can, okay, what Manikant will store? The data on Excel, on Word, every file will store on a OneDrive. Like Google having a Google Drive now. So Microsoft having a OneDrive. Like अगर मान के चलो Manikant ने किसी भी चीज को Excel या Word पे यूज किया ना, like okay, कोई Excel फाइल, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली OneDrive में जाके अपलोड हो जाएगा. That's a benefit. And even Manikant can use which application? Manikant क्या क्या use कर सकता है? Manikant can use the applications like PowerPoint, Word, To Do. So I mean, this all is the applications. Explore all your apps. Right? If Manikant will click on explore all your apps, okay. अब देखो. Now Manikant is going to log in. अब देखो ये Manikant का ID. Manikant is getting every access except admin. देख रहे हो? Manikant कुछ भी use कर सकता है. No, you just have, okay, see, this all thing Manikant can use. Correct.
OneNote for writing any notes. Okay, SharePoint, Project, PowerPoint, Power App, Planner, People. माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी नई नई सर्विसेज लॉन्च की है. लॉट ऑफ सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. Like Google's having a Google Sheet, Microsoft having Excel, you know very well. Forms, Google having a Google Form, Microsoft having a these forms. Bookings means appointment. Manikant can schedule appointment that if anyone want to meet to Manikant, okay, there should be a slot. बहुत सारे options है, lot of options. Right, seeing Manikant is getting all the options except admin. Okay, and Manikant will be able to use all these applications. Okay, Manikant will click on create here. Manikant अपना कुछ create भी कर सकता है. Like okay, some presentation, whatever Manikant want, right? See, देखो. Online Manikant is able to use everything. Online Manikant कुछ भी use कर सकता है every application. This is a Manikant user. ये Manikant user है. Right ना? Manikant can write okay whatever themes Manikant one can select. Because it's completely looks like a real PPT na, real PowerPoint in a office package, in an offline office package through Office 16 and 19, but it's an online service. If I will cut, तो मैंने cut कर दिया. Okay, so I cut it now. So automatically, what I cut it now automatically, the particular things got saved on a OneDrive. अब check कर सकते हो, you can check. Means there is a auto save facility. Manikant document, Manikant don't need to save a document. Manikant को document save करने की जरूरत नहीं है. Thing automatically saved in a OneDrive. What Manikant will use automatically will save on a OneDrive. Even will not save. वो बस open करेगा वो save हो जाएगा. With a by default name. Generally, what's happening? If you are writing any Word and PowerPoint and any Excel document, okay, you are writing in your in your okay PCs, correct? Okay, means you are creating some Excel file and all. So you need to save it. If you will not save, okay, and suddenly power goes off, or your okay, all your data will erase ना. जितना भी आपने डेटा आपने लिखा है अगर आपने सेव ही नहीं किया है और आपका पीसी ऑफ हो गया तो क्या होगा? सब कुछ बर्बाद. राइट, फिर से करना होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं. एवरी सेकेंड अगर ओके मणिकांत ने अगर एक्सेल में कुछ ए वर्ड लिखा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा वो. तो कभी भी पीसी ऑफ भी हो जाए डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता. एंड फॉर यूजर्स दैट्स एडवांटेज ऑफ ऑफिस 365. इट्स अ ऑटो सेव फैसिलिटी. राइट ना. So okay, just give me a minute. Okay, I will back and then we'll discuss about document management.
Uh, okay, guys, let's start. Sir, admin can't access by default like Teams, SharePoint to user end. No, admin can also access. I will tell you. Just see, simple thing. Okay, if use okay by default user access okay. I given a user admin now. Sorry, means I given a user access. So by default, all the application that a user can use is enabled for particular user. If you want to disable something, then you can disable on your admin portal for a particular user. Like I want that user will not able to use uh, Teams, Microsoft Teams. So from admin portal now, as an admin, I can disable Teams. Okay, if there is a special okay, if there is a service request will come for you, okay, from user side to give a permission for Teams. So I will enable the Teams. Basically, by default, every organization is using same thing, giving all the application access to users. Right? If any special cases comes that this should not be allowed for this user, then you can deny. फिर आप deny कर सकते. Any application you can deny from your portal. I will show you how. Okay, मैं को बता दूंगा कैसे करना. Okay. First, see the document management. Like there is a OneDrive, right? For example, user is going to use Excel. User कोई Excel use कर रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यूजर्स के डॉक्यूमेंट. This is the user. This is the Manikant. What I am doing now, just as you Manikant is doing. जो मैं कर रहा हूँ, अब ये समझो ये Manikant कर रहा है. This is a Manikant user, right? This is not me. Okay. I will be on a admin portal. मैं यहाँ पे होऊंगा. This is me, right? This is Manikant. Yes, for example, Manikant is writing. Okay, Manikant अभी okay कुछ लिख रहा है, right? So Manikant is saving some data like serial number, name, and location. Okay. देखो यहाँ पर ध्यान से. Okay. Manikant is writing something here. Serial number, name, and location. And the serial number, okay. Serial number, name, and then location. Correct. Manikant has written, right? Manikant has written these all things. Now, what will happen? Now, guys, if Manikant will cut, okay. Otherwise, if Manikant want, Manikant can save this document with a name. If otherwise, by default, there will be name book.xlfx. Okay, Manikant is giving the name like okay, saved. Okay, okay, cut everything. Now, if Manikant will go to OneDrive, if Manikant will go to OneDrive now, like I'm showing to you. See, Manikant is going to OneDrive. So Manikant will able to find the data, right? See now. Same thing. This document by default, there is no security for this user. This user can share any document with anyone. For example, Manikant user will click here, will click on copy link. Think now, Manikant is able to give a permission now. Anyone with the link, right? If Manikant will, I want as an admin, I want anyone with the link option will be disabled for Manikant. By default, you are able to see Manikant is able to share data with everyone. How? Click on copy link. Manikant will click on copy link. Okay. Anyone can edit this. Okay. Anyone with the link can edit. Okay. Manikant will copy. Okay. And guys, see, I am sending you the link. You will be able to edit. मैं आपको एक link भेज रहा हूँ. Okay. Just open this link. अब इस link को open करो. This link is accessible for everyone. Please edit. Please open the link and write serial number, name, and your location. Because this is a okay.
दिस एनीवन कैन एडिट, कोई भी इसे Accessible. एडिट कर सकता है, Yes. Accessible है. राइट ना, एक्सेसिबल है फॉर एवरीवन। हम्म. एंड मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ, प्लीज राइट ना, कुछ लिखो आप, सीरियल नंबर, नाम और लोकेशन, मतलब अपना सब कुछ लिख दो जो भी है यहाँ पे, है ना, सीरियल नंबर 1, नेम, प्रिंस, लोकेशन, दिल्ली, जो भी है लिख दो। देखो एज एन एडमिन मुझे भी दिख रहा है, राइट, मतलब एज एन मणिकांत यूजर मुझे दिख रहा है कि आप क्या एडिट कर रहे हो, देख रहे हो, फर्स्ट नेम प्रिंस, ओके, सीरियल नंबर 1 प्रिंस, लोकेशन पटना, ये सो चेंज, ओके, चेंजेस, ओके, यहाँ यहाँ मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे किसी प्रिंस ने कुछ पटना नाम का कुछ लिखा, राइट। सर इसमें रीड एंड राइट परमिशन भी दे सकते हैं, अगर रीड करना है तो सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, हाँ राइट करना बिल्कुल है तो राइट. बिल्कुल बिल्कुल, मणिकांत नाम का यूजर जो है, मणिकांत यूजर, सॉरी, वो ये परमिशन दे सकता है रीड राइट। अब देखो, अब मणिकांत क्या कर रहा है, मणिकांत क्लिक कर रहा है मैनेज एक्सेस, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के लिए, और इस लिंक को मणिकांत रीड भी कर सकता है, मणिकांत क्लिकिंग ऑन मैनेज एक्सेस, ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मणिकांत क्लिकिंग ऑन मैनेज एक्सेस, why it's not going to click, guys, you are getting my voice, Yes, yes. okay, I think there is a network issue, so okay, Manikant is able to, just wait, सर एक बार रिफ्रेश कर दीजिए इसको. yes, I'm thinking same, Manikant is going to open OneDrive, okay, and Manikant is going to click on manage access, okay, 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 otherwise, okay, Manikant is going to click on copy link, now see, Manikant can give bot permission, na, anyone with the link and people in immediate technoserve with the link, but what I want that Manikant will not be able to give permission to everyone. Anyone with the link can edit, or anyone with the link options will be disabled for Manikant, right? For a data security purpose, na. Otherwise, Mani can share a document. Otherwise, Manikant can share a document with anyone, na, as a user. But I want only this option will be visible for Manikant. People in Evgen TechnoServe with the link. I want only this option will be visible for Manikant. Anyone, people in the Evgen TechnoServe with the link. So what can I do? Okay, I'm going to delete this document. Okay, for example. Okay, now you can try to access the link. Okay, you will get error, right? Because particular document is deleted, right? Right now. Now, guys, for example, Manikant is going to, okay, this is a presentation, right? Manikant want to share this document. I want Manikant will not get the option of anyone with the link. What can I do? Simply, I can go to user section. Okay, as an admin, I will go to Manikant. I will click on Manikant. Okay, I clicked on Manikant, right? Then I will click on OneDrive. Okay, means I am giving a permission for Manikant OneDrive that, okay, see, sharing, manage external sharing. I want Manikant will not be able to share the document with everyone. No. By default, Manikant having access allows sharing with anonymous guest link and authenticated users. I am giving a permission only allows sharing with existing guest users in a directory. Means Manikant can share their document with those users whose information are present in my directory. मणिकांत अपना डॉक्यूमेंट उसके साथ ही शेयर कर सकता है जिसका इंफॉर्मेशन मेरे डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, मतलब जितने यूजर्स मेरे डायरेक्टरी में है। ओके, क्लिक ऑन सेव, मैंने कर दिया क्लिक सेव। ओके, सो एज एन एडमिन मैंने मणिकांत के लिए परमिशन कर दिया कि मणिकांत एनीवन विद द लिंक वाला ऑप्शन मणिकांत की डिजेबल हो। ठीक है, मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश। ओके, आई एम गोइंग टू टेस्ट, इज मणिकांत एबल टू शेयर अ डॉक्यूमेंट विद एवरीवन?
क्लिक ऑन कॉपी लिंक। थिंग मणिकांत को ऑप्शन नहीं आ रहा ना ये, एनीवन विद द लिंक, व्हाई? वी नाउ डिसेबल्ड। क्योंकि एज एन एडमिन मैंने डिजेबल कर दिया मणिकांत को। तो कितना इजीली हो जा रहा है मैनेज डॉक्यूमेंट करना, सॉरी डॉक्यूमेंट मैनेज करना, है ना? इवन इवन एज एन एडमिन मुझे मणिकांत यूजर के डॉक्यूमेंट को देखना है। आई जस्ट वांट टू व्यू मणिकांत डॉक्यूमेंट। करेक्ट, ओके, कि मणिकांत ने अपने यूज वन ड्राइव में क्या क्या डॉक्यूमेंट रखा है। करेक्ट। अगर मान के चलो, इफ जस्ट एज्यूम मणिकांत इज लिविंग अ कंपनी, मणिकांत यूजर कंपनी छोड़ रहा है, ठीक है, तो इसने रिजाइन दे दी, तो जो उसका डेटा है वो तो ओके, और मणिकांत का पासवर्ड मुझे पता नहीं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। तो मुझे मणिकांत का डेटा देखना है कि क्या क्या डेटा है, ओके, ताकि मैं उस डेटा को कहीं सेव कर सकूं और फिर इस ईयर को मैं डिलीट कर सकूं, राइट? सो डेटा आई कैन सेव मणिकांत डेटा एंड आई कैन डिलीट इट इजिली। So in this condition, what can I do? I will click on Manikant, click on OneDrive, मैं click करूंगा OneDrive पे। Think get access to files. Create a link to view and edit Manikant OneDrive files. As an admin मैं यहाँ लिंक बना दूंगा एक अपने लिए, मैं मणिकांत के वन ड्राइव में रिडायरेक्ट हो पाऊँ बिना लॉगिन की। क्लिक ऑन क्रिएट लिंक टू फाइल, ओके, तो क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक लिंक टू फाइल। तो एक लिंक बन के आ जाएगा मणिकांत के वन ड्राइव से। देखो लिंक बन के आ गया ना, सिंह, देख रहे हो? आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक, ओके, मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा एंड आई विल बी रिडायरेक्ट टू मणिकांत वन ड्राइव। मैं मणिकांत के वन ड्राइव में बिना लॉगिन के रिडायरेक्ट हो जाऊँ। आई एम गोइंग टू लॉगिन विथ माई अकाउंट, ओके, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। सर ये बिल्कुल एज इट इज होता है अभी फिलहाल मेरे से रियल टाइम में, बिल्कुल एज इट इज, हो रहा है ना आपके केस में भी? बिल्कुल एज इट इज है, हूबहू ऐसे हाँ ही नहीं, होता है। ऐसा ही होता है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको ओके एक वैसा क्लासेस ही दे रहा हूँ कि आप समझ पाओ अच्छे से। हम्म। तो इस लिंक को मैं ओके क्लिक करूंगा तो हमें भी सर यूजर का डेटा मिल जाता है, हम लिंक पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट वन ड्राइव पे ही जाके खुलता है, वो वहां से डाउनलोड हाँ कर लो वो फिर करे, डिलीट। वो खुलेगा ही। एक्चुअली क्या एरर आ रहा है? ओके, साइनिंग नॉट कंप्लीट, साइनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, भाई। ओके, सर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एमएफए रिसेट का, क्या? एमएफए रिसेट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका शायद एमएफए। हाँ, एमएफए का है ना, देखो एमएफए का क्या मोबाइल है नंबर, यहाँ पे। मोबाइल जैसे नंबर जाओगे चेंज ना होता एजोर एडी पे, है। एजोर एडी के अंदर एमएफए है, ठीक है, बता दूंगा मैं भी एमएफए अगर हम डिस्कस करेंगे, हम्म। ठीक है। तो इस लिंक से अभी एक्सेस नहीं हो पा रहा, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू एक्सेस, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में है, ठीक है। मैं भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्या है, नहीं नहीं इनकॉग्निटो मोड में तो नहीं है, नॉर्मल मोड ही है, ओके। एक मैं को रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि इस लिंक से मणिकांत के इस लिंक से मैं मुझे एक्सेस होना चाहिए मणिकांत के आईडी पे। क्रिएट लिंक टू फाइल्स, एंड ओके आई कैन, ओके आई एम ओपनिंग योर ब्राउजर के डिफरेंट ब्राउजर, क्योंकि एक ही साथ अगर मैं दो दो आईडी यूज करूंगा ना तो मे भी ये मुझे परमिशन ना दे। थिंक गाइस आई गॉट लॉगिन ना, ओके मैं लॉगिन हो गया ना, देख रहे हो मुझे मणिकांत का डेटा दिख रहा है ना। यस यस। मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा था, वाई? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा आईडी लॉगिन था, और क्या है कि एक ही ब्राउजर पे आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, कैश से हिस्ट्री वगैरह सेव हो जाती है ना। तो मैंने क्या किया, इसे इस लिंक को मैंने इनकॉग्निटो मोड पे ओपन कर लिया, अदरवाइज मैं इस लिंक को किसी अदर ओके अलग ब्राउजर में ओपन कर लूंगा। देख रहे हो प्रेजेंटेशन नाम का फाइल है, okay, मेरे लिए कोई मॉडिफाइड बाय मणिकांत, है ना। मुझे अगर कुछ फाइल को अपलोड करना है ना मणिकांत के लिए, इफ आई वांट अपलोड एनी फाइल, ओके आई विल क्लिक ऑन अपलोड, ठीक है, अगर मुझे कोई ऑफलाइन फाइल अपलोड करना है, ठीक है, एज एन एग्जांपल, ये देखो
तो एज एन एडमिन मैंने कोई फाइल अपलोड कर दी, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मॉडिफाइड बाई मणिकांत, राइट ना। देख रहे हो आप? ओके मैंने ओके अपलोड कर दिया। अब देखो मणिकांत यूजर है, जो मैंने फाइल अपलोड किया वो मणिकांत को दिखेगा। मतलब इट मीन्स सिंपली आई कैन मैनेज, देखो दिख ना। मतलब एज एन एडमिन मैं यूजर्स के डेटा को रीड भी कर पा रहा हूँ, राइट भी कर पा रहा हूँ, व्हाट एवर आई वांट आई कैन, आई एम द एडमिन। ठीक है, तो ये होता है सिंपल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कैसे किया जाता है इस तरह से, राइट। ओके तो क्लियर है ये क्या किया मैंने? Yes. राइट ना। इफ यू आर स्टार्ट वर्किंग विद वन ऑफिस 65 ना, तो ऐसा ऐसे ऐसे चीजें, ओके दिस काइंड ऑफ थिंग इज द बेसिक्स, ऐसे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब है मेल मैनेजमेंट यूजिंग एक्सचेंज। अब मैं जा रहा हूँ एक्सचेंज के ऊपर कि एक्सचेंज के थ्रू कैसे मेल को मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज मेल थ्रू एक्सचेंज, राइट ना। सो दिस ओके, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था नॉर्मल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ये क्या था? नॉर्मल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो सर एक मिनट सर, छोटी सी, जैसे मान लीजिए सर अभी आपने बोला था कि मान लीजिए मुझे किसी यूजर को आउटलुक का एक्सेस देना है बट टीम्स का नहीं देना है, तो हाँ उसके लिए क्या करते हाँ, थे सर? एक बार। मणिकांत ओके क्लिक कर दो मणिकांत पे, हम्म, क्लिक ऑन लाइसेंसेस एंड एप्स, क्लिक ऑन ओके एप्स, व्यू ऑल एप्स एंड सर्विसेज, किसका किसने देना है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, क्लिक ऑन टर्न ऑफ, ओके क्लिक ऑन सेव चेंजेस। ओके मतलब यूजर्स के अंदर जा करके आपको दिख जाएगा सब कुछ। ओके इफ यू विल गो ऑन यूजर्स ना, हम्म, राइट, यहाँ पे जाओगे आप देखोगे तो क्या क्या ऐप ओके एप्स है वो सब दिख जाएगी। जैसे यहाँ ओके अगर सर बल्क यूजर होंगे मे बी ओवरऑल 20 यूजर, तो एट हाँ ए तो टाइम सब कैसे पे क्लिक होगा? कर लो। वन बाय वन करना होगा। वो तो फिर मैनुअली करना होगा ना, वन बाय हाँ वन जाकर। वन बाय वन हाँ करना होगा बिल्कुल। आपको सब में जा करके, ओके। वन बाय वन आपको सब में जाकर के करना होगा, और ये 1 सेकंड का काम है। मनीकांत पे क्लिक कर दो, किसका एक्सेस नहीं देना है, जैसे कि मैंने टीम्स का एक्सेस डिनाई कर दिया, ठीक है, डिनाई कर दिया ना, ऑफ कर दिया टीम का एक्सेस, ठीक है। अब मैं एक को टेस्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक सब कुछ लॉग आउट कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। ओके कर दिया लॉग आउट मैंने। पहले आपने क्या देखा, फर्स्टली यू हैड सीन दैट मणिकांत हैविंग एक्सेस ऑफ टीम्स एंड एवरीथिंग। अब मैंने टीम्स का एक्सेस डिनाई कर दिया, है ना, ऑफ। मुझे ओके इफ यू वांट टू डिनाई ऑल अदर एक्सेस, अगर आपको कुछ और भी डिनाई करना है आप कर सकते हो। कैसे करना होता है? सिंपली किसका डिनाई करना है? लाइक आई वांट टू डिनाई वन मोर एप्लीकेशन लाइक स्काइप, स्काइप का मुझे डिनाई करना, ठीक है, टर्न ऑफ। ओके सेव चेंजेस, मुझे और भी करना है, सो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन और सर्विस रिक्वेस्ट और टिकट्स, कैसा क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड। सो मैंने देखो आई हैव डिनाइड 2 थिंग्स, टीम्स एंड स्काइप, टीम्स एंड स्काइप, देख रहे हो, राइट ना। सो ओके मैं टेस्ट कर लेता हूँ, राइट, वन टाइम। ओके नाउ आई एम गोइंग टू, ओके मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू लॉग इन विथ मणिकांत यूजर, ओके मैं मणिकांत के साथ लॉग इन कर लेता हूँ। फॉर मणिकांत माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन शुड बी डिजेबल, सिंपल ना, उसकी मणिकांत के लिए डिजेबल होना चाहिए। सो ओके आई एम गोइंग टू टेस्ट थ्रू अ सिंपल वे, मैं एक सिंपल तरीके से टेस्ट कर ले रहा हूँ। आउटलुक पे लॉग इन करके, लॉग इन आउटलुक एंड देन ओपन और एप्लीकेशन एंड कैन टेस्ट, क्लिक ऑन साइनिंग, साइनिंग पे क्लिक कर दो। ओके या ओके दिस मणिकांत मेल आईडी, नहीं नहीं इट्स नॉट अ मेल आईडी, ये कोई ओके आई कॉपी लिंक ना, ये लिंक था, राइट। व्हाट इज मणिकांत मेल आईडी, आई कैन कॉपी, मैं सिंपल का कॉपी कर, ओके दिस इज मणिकांत मेल आईडी, आई कैन कॉपी एंड आई कैन पेस्ट एंड गोइंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ मैं। ओके आई एम गिविंग अ पासवर्ड फॉर मणिकांत,
मतलब अब ये समझो मणिकांत लॉग इन करा, राइट? आई गिवन अ परमिशन एज एन एडमिन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डिनाइड, but Manikant want to use Microsoft Teams. Okay, but according to the request and according to the company policies, I have denied Microsoft Teams. तो यहाँ पे एक ऑप्शन कम हो गया ना. If Manikant will click on all apps, so Microsoft Teams नहीं दिखेगा Manikant को. Okay, Manikant will not be able to see Microsoft Teams. Seeing, showing you Teams. कोई दिख रहा है Teams ऑप्शन Manikant No. के लिए? No. No. क्योंकि मैंने डिनाई कर दिया सिंपली, because I denied from my admin portal. देख रहे हो ना, सब एप्लीकेशंस है, all the application is present, right? But only Teams शो नहीं कर रहे. देख रहे हो, कहीं किसी भी हालत में, any way, any conditions, Manikant cannot use Microsoft Teams. If Manikant want to use, right? Okay, there will be a service request will come. Simply what I will do, मैं क्या करूंगा, अगर Manikant को यूज करना है तो I will go to Manikant user. Okay, I will go to license and apps. अगर मुझे enable करना है, I will click on Microsoft Teams. I will click on turn on. Okay, click on yes, turn on one service. Yes. Okay, it will take a few minutes. अब ये कुछ time लेगा, right? And Manikant will able to use Teams and all. Which Teams okay, अब Manikant use कर पाएगा, right? If I will again re-log in, I can see that Manikant having a Teams अभी तक दिखेगा नहीं. देखो, okay, not updated. But if I will re-log in, अगर मैं अगर okay re-log in, okay, log out, okay, and okay re-log in. सब कुछ कट करके cutting everything. I am going to re-log in. Okay. So here I will write like outlook.com. Okay. अब मणिकांत को एक्सेस होना चाहिए ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का. लेट्स टेस्ट इट. ओके, टेस्ट करते हैं इसके ऊपर एक्सेस है कि नहीं, इट्स एक्सेसिबल और नॉट. Going to log in with Manikant user. Okay, Manikant should get a option of Teams. Okay, I'm giving a password. Yes. अभी तक अपडेट नहीं हुआ, राइट? टिल नाउ इट्स नॉट अपडेटेड. इट विल टेक टाइम, 5 मिनट to 7 मिनट का टाइम ये लेता है अपडेट्स होने में. आई कैन चेक. देयर इज ऑप्शन फॉर वन ड्राइव, सॉरी विच ऑप्शन, टीम्स ना. अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, राइट? इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, ये कुछ टाइम लेगा, फिर देन ये अपडेट हो जाएगा, राइट? आई एम डूइंग इंस्टेंटली. ओके, मैं इंस्टेंटली कर रहा हूँ, इसलिए हो नहीं रहा है, right? Otherwise Manikant will able to use, Manikant will get option of Teams, right? Because it's on na, so Manikant will get option of Teams. If I will wait for a few minutes na and I will re-log in again, so Manikant will get option of Teams. So simple way to manage the user document, application, okay, and whatever. Okay, and you are talking about a Intune, right? Which is a device management. Intune क्या होता है? Intune is a feature in Office 365 and it's a feature from the Microsoft actually for device management, device registration and device management. आपको दिख रहा है यहाँ पे, click on devices. Manikant does not have any devices involved in Intune, right? आपको Intune के बारे में कल बताऊंगा. Tomorrow I will teach you about Intune, right? क्योंकि okay, I was thinking to give you everything in a one day. तो मैंने सोचा कि आपको एक दिन में ही पूरा Office 365 के बारे में बता दूं, but no. So tomorrow I will teach you about Intune, and next week, okay, about database, basic database, and then project discussion. And next week will be your final, okay, finalize. सर कल तक ये ऑफिस 365 खत्म हो जाएगा? हाँ, कल, आज मैं एक्सचेंज वगैरह बता दूंगा, कल बता दूंगा Intune वगैरह, Intune और सिक्योरिटी का टैग है ना. आज ओके, आज हम डिस्कस कर लेंगे अभी एक्सचेंज और एजोर एडी, Office 365 के साथ क्या इसका काम.
कल डिस्कस कर लेंगे सिक्योरिटी, कंप्लायंस और इंट्यून, जो बेसिक्स, इतना काफी रहेगा आपके लिए, राइट ना। सो यस प्रिंस, यू वांट टू से समथिंग? यस, एक सर ईएमएस लाइसेंस क्या होता है सर? ईएमएस, ईएमएस भी Yes, एक ईएमएस एक लाइसेंस होता है ऑफिस 65 के अंदर ही, E3 वगैरह है ना, वैसे ईएमएस का लाइसेंस आता है। कोई कंपनी E3 यूज करती है, कोई ईएमएस लाइसेंस यूज करती है, ठीक है। ईएमएस लाइसेंस भी होता है ऑफिस 65 के अंदर का ही लाइसेंस है, बट बेसिकली हम E3 E5 ही यूज करते हैं, है ना। ईएमएस मतलब ईएमएस की फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सर एक ईएमएस एक है माइक्रोसॉफ्ट CASB, ओके है। वो भी आपका लाइसेंस ही है, ओके माइक्रोसॉफ्ट CSSB ना, CSSB, दिस इज ऑल्सो अ लाइसेंस। सर मेल बॉक्स का साइज बढ़ाना, हाँ हाँ, ये सब ये देखेंगे अभी, एक्सचेंज में देखेंगे। हम्म, एक्सचेंज में है ना, सब कुछ देखेंगे, कैसे मेल बॉक्स का साइज बढ़ाते हैं, कैसे बैक घटाते हैं। जी करेक्ट। जी, और बैकअप जो अगर यूजर चला भी गया हो तो बैकअप 30 दिन तक कैसे लेते हैं वो सब। हाँ वो तो ऑटोमेटिक रहता है, बताऊंगा मैं अभी, ये देखेंगे मैं मेल में, अभी एक्सचेंज में देखेंगे। जितना भी डिस्कस किया हमने, व्हाट वी हैव डिस्कस, इट्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे कैसे क्या करना है, जो राइट बेसिक काम होता है स्टार्टिंग लेवल। फिर थोड़े राइट। एडवांस पे आओगे आप, इफ यू विल कम ऑन समथिंग एडवांस ऑन ऑफिस 65, आपको मिलेगा एक्सचेंज। फिर थोड़े एडवांस पे आओगे, यू विल गेट एजोर एडी। फिर थोड़े एडवांस पे आओगे, यू विल गेट सिक्योरिटी। फिर थोड़े एडवांस पे आओगे इंट्यून। उसके बाद फिर CLI आ जाता है, कमांड लाइन का आ जाता है। GUI में इतना ही होता ओके, है। इसके बाद तो सर ये कमांड CLI के थ्रू भी ये चीजें दी जा सकती है, मतलब ये आप कह रहे हो कि विंडोज में ये GUI और CLI दोनों में काम अलग अलग होगा या सर एक ही काम रहेगा? सेम ही काम है। जो मैंने इंट्यून मतलब जो मैंने किया अभी GUI के थ्रू ना, वो मैं हम्म, CLI के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो सर उतना इस कमांड्स अगर अभी याद रखें ना, ये हम्म, बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन सर एक क्योंकि क्वेश्चन उठता है कि हम्म, जब हम इतने इजी वे में कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक, तो हमें हम्म, फिर CLI पे इस चीज को करने की क्या CLI में जरूरत क्या बेनिफिट्स होता है कि आपने एक बार कर लिया, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा होगा कमांड का, ठीक है। है? आपको क्या रन करना, आपको बार बार क्लिक नहीं करना होगा, अपने कमांड कॉपी किया, पेस्ट कर, हो गया काम, हम्म। है ना। तो वो जब फास्ट हो जाता है। वो मैक वगैरह में यूज होता है जहाँ पे CLI कमांड बेस्ड हाँ, कुछ। तो वो थोड़ा मतलब अलग लेवल का हो जाता है, उतना नहीं जाना अभी अपने, ठीक है। अपने को बेसिक्स ऑफिस 65 को क्या करना है, कवर करना है एज ए ना बेसिक एडमिन जो काम होता है ऑफिस 65 के अंदर। बाकी ऑफिस 65 का भी आर्किटेक्ट लेवल का होता है, हम्म। सर्टिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है। तो विन टू रन उतना ही पढ़ो जितना डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि पढ़ने के बाद करना भी होता है प्रैक्टिकल, राइट, बिल्कुल। सीखना भी होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में इतना काफी रहेगा एज एन स्टार्टिंग लेवल जब जाओगे क्लाउड पे। वैसे वैसे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, काफी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो है ही, इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन होता है, पीपल्स हैविंग अ कंफ्यूजन, ये क्या हो रहा है, कैसे क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है डॉक्यूमेंट का, कैसे एडमिन एक्सेस ले लेगा। तो अब समझ में आ रहा हो कैसे होता है एक्सेस, बिल्कुल। है ना। अब देखते हैं, नाउ लेट्स गो ऑन मेल मैनेजमेंट यूजिंग एक्सचेंज। एक्सचेंज के थ्रू मेल को कैसे मैनेज करते हैं, मीन्स, अब देखो ध्यान से सुनना, दिस इज अ यूजर मेल आईडी, राइट। सो मणिकांत कैन सेंड अ मेल टू एनीवन, मणिकांत किसी को मेल भेज सकता है। मणिकांत कैन रिसीव अ मेल फ्रॉम एनीवन, एनी साइज, मणिकांत कैन सेंड एनी साइज ऑफ मेल, राइट ना। बट आई वांट टू मैनेज मणिकांत मेल बॉक्स, मणिकांत मेल बॉक्स परमिशन, आई वांट टू ट्रेस अ मेल, मुझे मेल को ट्रेस भी करना है। तो सिंपल, एज एन एडमिन आई विल क्लिक ऑन एक्सचेंज। So for me, Exchange Admin Center will open. For me, what will happen? Exchange Admin Center will open. ये open हो रहा है, ठीक ना, Exchange Admin Center. Because Exchange is a server, mail server. Exchange is a mail server. Okay, अब देखो, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन all the option. Just wait and watch.
Okay, so this is the exchange admin center for me as an admin. अब मैं मणिकांत यूजर को कैसे हैंडल करूंगा? How would I handle मणिकांत यूजर? Okay, correct. So guys, let's take a break of 5 minutes only. Okay, I will back on 9:30. Okay, and then we'll discuss about mail management through exchange. Okay.
Okay guys, so let's start. Okay, अब देखो आप, let's see now. ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग का देख लिया मैं, राइट? ओके, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, एप्लीकेशन, परमिशन, बहुत इजी होता है, जस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना। मेल मैनेजमेंट कैसे करना है? मेल मैनेजमेंट यूजिंग एक्सचेंज। सो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, ओके आई क्लिक ऑन एक्सचेंज। ओके, क्लिक ऑन सॉल्व, क्लिक ऑन एक्सचेंज। नाउ दिस इज एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या है? एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? मुझे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, just as you mailbox permission, size permission, size in the sense I want user will not be able to send more than 10 MB in a one mail. User will not be able to receive more than 10 MB. Okay, by default क्या होता है ना, by default, okay, by default in exchange में क्या होता है, in exchange server by default sending size जो होता है ना, मीन्स यूजर कैन सेंड अप टू 35 MB ऑफ मेल। यूजर एक बार में 35 MB का मेल सेंड कर सकता है बाय डिफॉल्ट। इट्स अ फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज। एंड रिसीविंग साइज इट्स 36 MB, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लायंस रूल्स, आई वांट दैट यूजर विल नॉट बी एबल टू सेंड मोर देन 10 MB mail to anyone, and user cannot receive a mail from anyone who will send more than 10 MB. What will I do? मैं क्या करूँगा? Simple. There is option here, mail flow settings. मुझे सबके लिए करना. I don't want for Manikant only. I want for everyone. If I want for Manikant only, I will click on Manikant. Then I will do. Okay, I will click on Manikant. Okay, I can. Okay. As I think network is slow. All of you are getting my voice. It's clear. Yes, yes, sir. Yes, Clear, sir, clear. clear. So if I want for only Manikant, I will click on Manikant. Okay, and I will get an option. मुझे options मिलेगा. I think this portal is not working fine. It's a free trial, na? So Office 365 is saying to us, free trial, you cannot use a lot of things. I want for everyone, right? Okay, I will click on mail flow settings. See, message size restriction, clear option. Click on message size restriction. देखो, by default क्या है? Set a maximum size for messages that can be sent and received by the new mailboxes in your organization. These settings are applied by default to mailboxes you create. By default क्या है? Sending में maximum user can send maximum of 35,840 KB, which is exact at 35 MB. You can calculate, आप calculate कर सकते. By default ये permission है कि user 35,840 KB तक के मैसेज को सेंड कर सकते. 35,840. I can divide this into 1024, na? Right? I want to convert into MB. So divide by Right, okay. right. Click on how many? 35 MB. Okay, as I told you, जैसा मैंने बताया आपको, it's correct. Because I remember these all things. So ये correct है. मुझे कितना देना है? 10 MB. 5 MB. Okay, depends on okay condition. 10 MB means 10240 KB. Receiving size also 10 MB. 10240 KB. Right now? Or maximum I can set 150 MB of sending or 150 MB of receiving. Maximum मैं 150 MB sending और receiving set कर सकता हूँ. Max to max. Default 35. I edited it 10 MB. Maximum I can set 150 MB. Okay, I'm clicking save. Think setting updated, it may take up to 5 minutes. Setting update हो गया है. Okay, it will take 5 minutes of time and it will update. फिर update हो जाएगा. Okay. You are seeing the option export mailbox. Like Manikant, आप पूछे थे ना कि सर मुझे यूजर का मेलबॉक्स को पूरा एक्सपोर्ट करना है, मतलब देखना है क्या क्या उसके मेल में है ना? सो आप सिंपल क्लिक करो एक्सपोर्ट मेलबॉक्स, तो पूरा मेलबॉक्स का ओके एक्ससीजी फाइल बन के आ जाएगा और सबका, नॉट ओनली वन, एक का नहीं, सबका आ जाएगा. देख रहे हो?
यूजर ने कुछ भेजा ही नहीं किसी को, राइट ना। ओके, तो सर ऑटोमेटिक किसी का सर जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को 100 GB का मिलता है, किसी को जनरली हम लोग पीएसटी का बैकअप लेते हैं तो क्योंकि मेन डेटा मेल पे होता है, तो किसी को 50 GB है, तो सर वो 50 GB यहाँ डाउनलोड होगी एक्सेल यस में। यस, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया एक्सेल में। इट्स डॉट सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल होती है लेकिन डॉट सीएसवी का फॉर्मेट होता है। तो सर यहाँ से हम पूरा डेटा उठा सकते हैं, जैसे कि सब पूरी कुछ सब मेल कुछ सब कुछ देखो यहाँ पे, किसी जैसे की। कि मैंने मैंने यहाँ पे डेटा उठाया, राइट। हम्म, एलाइज नेम देखो यहाँ पे, देखो रिसिपेंट्स मेल टाइप, ये मेल आईडी, राइट। एक नाम है मणिकांत, जो उसका मेल आईडी है, मेल बॉक्स है। एलाइज नेम मणिकांत, नेम मणिकांत, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था, ये हुआ था। ईमेल एड्रेस में क्या है, ठीक है, किसे क्या ईमेल एड्रेस है, दिस ईमेल एड्रेस। OWM मीन्स आउटलुक ऑन द वेब। ओके, कोई पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं। वर्जन, ओके, ये मेल आईडी है। ओके, यहाँ पे आपको सब सर कुछ बन क्या जाता है ऑटोमेटिक, एवरीथिंग। लेकिन ये तो सर एक क्वेश्चन है सर, ये तो एक्सेल फॉर्मेट में है, लेकिन मेल एक्सेल, तो जस्ट मेल का फॉर्मेट तो अलग होता है ना, जस्ट देखो बता वी रहा आर हूँ यूजिंग। बता रहा हूँ मेल का फॉर्मेट। ये एक सिंबल क्या हो गया, दिस इज सिंबल एक्सेल फॉर्मेट, राइट। ठीक है, अगर आपको पूरे मेल बॉक्स को ये करना है तो आपने क्लिक कर दिया मणिकांत पे, राइट, क्योंकि आपको पर्टिकुलर यूजर का करना है ना। तो यू कैन क्लिक ऑन मणिकांत। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, Okay, हो गया मणिकांत, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शंस है मेल बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे है ओके, रिटेंशन पॉलिसी, मीन्स कितने टाइम तक वो रिटेन रहेगा, राइट। यू कैन क्लिक ऑन मैनेज मेल बॉक्स पॉलिसीज। आप यहाँ पे लगा दो, ओके, पॉलिसीज क्रिएट करो खुद से। ये बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट पॉलिसी बना होता है। अगर वो खुद का पॉलिसी क्रिएट करना है तो बताऊंगा मैं कैसे कर खुद का पॉलिसी क्रिएट, राइट। सो ये मेल बॉक्स है बाई डिफॉल्ट पॉलिसी, राइट ना। ओके, रोल असाइनमेंट कुछ नहीं है, डिफॉल्ट पॉलिसीज है। ओके, मैसेज डिलीवरी रेस्ट्रिक्शन, ओके, कोई डिलीवरी का रेस्ट्रिक्शन, इफ यू वांट यू कैन सेट। मतलब अगर आप ये सेट करना चाहते हो, दिस यूजर कैन ओनली गेट अ मैसेज फ्रॉम सिलेक्टेड सेंडर्स, कि इसे ये पार्टिकुलर सेंडर ईमेल सेंड कर सकते। यू कैन सेट एड सेंडर, तो आप यहाँ सेट कर सकते हो, लाइक ओके, ओनली तरुण कैन सेंड अ मेल टू दिस पर्सन। देख रहे हो, मीन्स दिस यूजर विल ओनली गेट अ मेल फ्रॉम तरुण। इफ एनीवन अदर विल सेंड अ मेल टू दिस यूजर विल नॉट गेट अ मेल। ओके, और दिस थिंग्स, ये चीजें हैं। ईमेल फॉरवर्डिंग, मैनेज ईमेल फॉरवर्डिंग। अब ओके, फॉरवर्ड ऑल ईमेल सेंड टू दिस मेल बॉक्स। अब क्या चाहते हो, इस मेल बॉक्स में जितना भी मेल आए वो कहाँ फॉरवर्ड हो, किसी ओके, यू कैन, पार्टिकुलर को, हाँ, ओके, जिसको आप देना अपना, है। ओके, आप अपना मेल आईडी दे दो, राइट, एज एन एडमिन, ओके, सेव कर दो। सो इधर इससे बेटर में कुछ है नहीं। अगर यूजर, किसी ने भी यूजर को मेल भेजा, अब वो आपके मेल बॉक्स में भी ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। राइट। वैसे बाय डिफॉल्ट सर हम इसको आउटलुक ऐप, जो हम लोग डेस्कटॉप पे आउटलुक चलाते हैं फॉर्मेट में, तो उससे भी आई थिंक ये रूल लगा के भी ये काम हो सकता है ना, ईमेल हाँ, ये फॉरवर्डिंग। हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत इजी वे में हो जा रहा है ना। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल इजी वे में हो ओके, सकता है। फॉरवर्डिंग एड्रेस इज सेट टू तरुण। इसमें आप कोई भी बंदा मेल सेंड करेगा तो मेरे मेल आईडी पे ही आ जाएगा, यस। ठीक है। तो सिंपल थिंग, मैं ओके, मैं सिंपल देख पाऊंगा कि इस यूजर ने क्या मेल भेजा है, राइट। किस यूजर ने क्या की, ओके, इससे मेल भेजा, राइट। ओके, कीप अ कॉपी फॉरवर्डेड मेल इन दिस मेल बॉक्स। फॉरवर्डेड मेल का कॉपी भी रखो इस मेल बॉक्स में, है ना। राइट। एक कॉपी बन जाए, अब ये भी इनेबल कर दो। ओके, इट विल टेक अ 5 मिनट, सेटिंग्स विल अपडेट। तो इतने सारे फैसिलिटीज हैं सिंपल फॉर मैनेजिंग मेल बॉक्स। और भी ऑप्शंस है, आप पर्टिकुलर यूजर्स का कुछ कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। बाकी वो मैं बताऊंगा रोल्स वगैरह क्रिएट करना, लाइक जो कि जनरल, ओके, ये जनरल में, ठीक है। अब देखो, बाय डिफॉल्ट 99 GB तक का मेल बॉक्स स्पेस मिला, राइट। बाय डिफॉल्ट 99 GB तक का मिला। सो बहुत, मीन साइज इज इनफ, साइज इनफ, राइट ना। मोर साइज। मेल बॉक्स का साइज इनफ है। और ईमेल एड्रेस ये है डिफॉल्ट एप्लीकेशन,
ठीक है, ये सब आपने देख लिया। और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ओके, ऑर्गेनाइजेशन टैब में क्या है, यू कैन सेट, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो लाइक दिस यूजर इज अ ओके मैनेजर, ओके हु इज अ मैनेजर, आप ऐसा सेट कर सकते हाँ हाँ, उसमें हम रिपोर्टिंग मैनेजर वगैरह सेट कर हो। सकते हैं हाँ, इसमें। आप इजीली सेट कर सकते हो। डेलीगेशन में क्या कर सकते हो, सेंड एज, ऑन बिहाफ, रीड एंड, ओके आप यहाँ सेट कर सकते हो दिस द फुल एक्सेस, द फुल एक्सेस परमिशन अलाउज अ डेलीगेट टू ऑपरेट दिस मेलबॉक्स एंड बिहेव एज अ मेलबॉक्स ओनर। आप रीड कर दो यहाँ पे। आप ओके, आप ओके, यू कैन ऐड योर नेम, अपना नाम ऐड कर दो कि आप इस पार्टिकुलर मेल बॉक्स ऑनर बन जाओ। लाइक यू कैन सेंड एनी मेल इन ऑन बिहाफ ऑफ मनिकांत टू एनी, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कंडीशन के ओके डिपेंड करता है, वॉट एवर यू वांट, आप क्या चाहते हैं, राइट ना। और अदर्स में क्या है, ऑटोमेटिक रिप्लाई यू कैन सेट, आप ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हो इफ यूजर इज नॉट रीचेबल, राइट ना। मणिकांत के बिहाफ पे आप सेट कर सकते हो ऑटोमेटिक रिप्लाई, ओके इफ यू वांट टू सेट। फिर क्या है, रिसिपेंट्स लिमिट्स, सेट रिसिपेंट्स लिमिट, मतलब स्पेसिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड रिसिपेंट टू द सीसी वीसीसी। आप ये सेट कर सकते हो कि एक यूजर किसी को मेल भेजा, राइट, तो दिस यूजर कैन सेंड अ मेल टू अ पर्सन, हाउ मेनी पर्सन मैक्सिमम, होता है ना, सीसी वीसीसी, ओके टू, then cc then vcc, okay na cc multiple mail id, vcc multiple mail id. So okay, maximum recipient means if I am sending a mail to you, so your mail id is a recipient's mail id for me, आपका मेल id क्या होगा, recipient's mail id होगा। ये है मेल बॉक्स आर्किव। अब ये ओके, ये ओके, ये कर सकते हो ऑटोमेटिक आर्किव, you can set automatic archive like if you okay, if the user mailbox space is full, so there will be okay auto archive, like आउटलुक में होता है ना आर्किव का, जो कि जो यस यस मैनुअली सर। करते हो, हम्म। राइट। तो यहाँ सर पे यू ये कैन, भी आउटलुक से ही स्पेस लेता है ना, ये हाँ आर्काइव अगर हाँ, ऑनलाइन आर्काइव सब लेते हैं कुछ तो। आउटलुक का स्पेस लेगा ये, हम्म, लेकिन वो आर्किव में ही दिखेगा जाकर। कस्टम हम्म। एट्रीब्यूट्स क्या है, देखो यहाँ पे कि यू आप यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो अबाउट अ यूजर, लाइक दिस यूजर्स नेम इज दिस, दिस इज द ओके मैनेज, ओके मैनेज, ओके ओके लिटिगेशन होल्ड, यहाँ देखो ये क्या है, ओके लिटिगेशन होल्ड मीन्स यूजर कैन रिमूव समथिंग फ्रॉम देयर मेल बॉक्स, देख रहे हो कि यूजर अपने मेल बॉक्स में से कुछ डिलीट भी कर सके। सो बेसिकली ओके ये यूज करते नहीं है, ओके ओके लिटिगेशन होल्ड्स, वो ऑफिस 365 में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है हाँ डिलीट वो करने सेव के बाद। ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट राइट राइट। सो ओके ये है, ये होता है नॉर्मल एक यूजर के लिए। अब बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है मेल फ्लो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रैश अ मेल एज एन एडमिन, राइट, एज एन एडमिन आप ओके, लाइक आप ये ओके ये करना चाहते हो, यू ओके लाइक देयर इज अ सीनियर इन अ कंपनी एंड योर सीनियर इज सेइंग टू यू सेंड द स्टेटस ऑफ ऑल द यूजर मेल एड्रेस, जितने भी यूजर्स हैं सबका स्टेटस मुझे सेंड करो। सो व्हाट कैन यू डू, you can trace a user mail id like Manikant has sent a mail to which person, which date, what is the mail, what is the subject, कि मणिकांत ने किसी को मेल सेंड किया है तो क्या सेंड किया, किसे सेंड किया, कितने टाइम को सेंड किया, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उसने सेंड किया है, क्या लिखा है उसने। तो सिंपली वी कैन ट्रेस यूजर मेल, हाउ, क्लिक ऑन मेल फ्लो, क्लिक ऑन मैसेज ट्रेस, है ना। तो व्हाट वी वांट टू ट्रेस, आप क्या ट्रेस करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रेस, सिंपल, बहुत इजी ऑप्शन से क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रेस। आप यहाँ स्टैंडर्ड दे दो, अगर आपको किसी पार्टिकुलर सेंडर का ट्रेस करना है, लाइक आई वांट टू ट्रेस फॉर मणिकांत, देखोगे। अदर मुझे ओके, इफ आई वांट टू ट्रेस फॉर एवरीवन, मुझे सबका करना है, तो सेंडर और रिसिपेंट्स ऑल, कितने दिनों का करना है, मैक्सिमम वी कैन ट्रेस 7 डेज, 7 दिन तक का मैक्सिमम ट्रेस कर सकते हैं ना, फ्री ट्रायल ऑन ओके, अदरवाइज 90 डेज का टोटल होता है। 7 डेज ओके, आई वांट फॉर 7 डेज, मतलब मैं चाहता हूँ आज से, टुडे इज 3rd ऑफ सितंबर ना, 2nd सितंबर, 1st सितंबर, 31 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त एंड देन 27 अगस्त, मीन्स 27 अगस्त टू टिल टुडे मुझे इतना मेल ट्रेस करना है। सो आई कैन सेट अ रेंज, टाइम रेंज कि मुझे कितने टाइम तक का मेल को ट्रेस करना है।
डिलीवरी स्टेटस मीन्स आप क्या ट्रेस करना चाहते हो, स्टैंडिंग, डिलीवर्ड, एक्सपेंड, पेंडिंग, फिल्टर एंड स्पैम। आई वांट एवरीवन, आई वांट, अगर मान के चलो किसी यूजर ने कोई मेल को सेंड किया, राइट, ओके द मेल इज नॉट सेंड, ओके इट्स ऑन अ यूजर आउटबॉक्स, इवन आई कैन चेक, इवन मैं ओके मेरे पास फाइल बन के आ जाएगा दैट दिस इज द आउटबॉक्स में, आई वांट टू ट्रेस all status, standing, okay, or delivered status, failure status, all, right? Message ID आप यहाँ छोड़ दो इसे, you can leave it by default. Direction, what do you want to trace, inbound or outbound? I want all. Inbound, outbound means sending or receiving. Outbound means receiving, inbound means sending, right? Right ना? Inbound मतलब sending, कि अगर कोई यूजर किसी को मेल सेंड किया, आपको सेंडिंग का ट्रेस करना, करेक्ट? You can give here all, of all पे क्लिक करो. Original client IP address इसे आप छोड़ दो, you can leave it by default. रिपोर्ट टाइप आपको कैसा रिपोर्ट चाहिए, समरी रिपोर्ट, इंस्टेंट, CSV फाइल, आई वांट CSV फाइल, समरी रिपोर्ट, यू कैन क्लिक ऑन समरी रिपोर्ट, क्लिक ऑन सर्च, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट? व्हाई? बिकॉज दिस इज अ फ्रेश आईडी ना, अभी तक जो यूजर्स हैं मेरे पास, तरुण एंड मणिकांत, तरुण हैजंट सेंड अ मेल टू एनीवन, मणिकांत हैजंट सेंड अ मेल, तो यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज हियर डेटा विल कम, यहाँ पे डेटा बन के आ जाएगा, ओके यू कैन एक्सपोर्ट, ओके यू कैन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट रिजल्ट्स, ओके और अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ओके एज एन CSV फाइल, तो पूरा ट्रेसिंग का बन के आ जाएगा, दैट दिस इज अ मणिकांत यूजर सेंट अ मेल टू दिस पर्सन ऑन दिस डेट, एक पूरा CSV फाइल बन के आ जाएगा। अगर आपको किसी सिंगल का करना है तो आई टोल्ड यू, ओके ओके बताया मैंने, ओके क्या करना है, ओके अब यहाँ पे पार्टिकुलर सेंडिंग का ओके कर दो, लाइक ओके आपको मणिकांत का सेंड, ओके ट्रेस करना है, मणिकांत, ओके इन अ स्टैंडर्ड मणिकांत, राइट, रिसिपेंट्स एनीवन, रिसीवर कोई भी हो, करेक्ट, सर्च, राइट, बिकॉज मणिकांत यूजर इज अ न्यू यूजर ना, बिफोर आवर्स अगो आई क्रिएटेड, मैंने कुछ ओके घंटे पहले क्रिएट किया ना मणिकांत यूजर को, तो कोई मैसेज नहीं है, तो आप ट्रेस कर सकते हो, मैसेज ट्रेसिंग इज पॉसिबल थ्रू एक्सचेंज, और आपको ज्यादा एडवांस पे काम करना है तो यू कैन ट्रेस आउट। देन रूल्स, रूल्स का ऑप्शन है, देखो यहाँ यू कैन क्रिएट रूल्स, आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो, लाइक ओके इट विल टेक अ टाइम, देखो यहाँ पे यू कैन क्रिएट अ रूल्स, आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो, क्लिक ऑन प्लस, आपको क्या रूल्स क्रिएट करना है, बाईपास, स्पैम फिल्टरिंग, देख रहे हो कितने सारे रूल्स हैं यहाँ पे, जनरेट एन इंसिडेंट रिपोर्ट व्हेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज डिटेक्टेड, आपको क्या रूल क्रिएट करना है, यू कैन क्रिएट अ कस्टम रूल एज वेल, आप कोई कस्टम रूल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट दिस इज द मोस्ट यूज्ड रूल्स, restrict message by sender or recipients, okay okay I'm doing this, okay मैं ये कर रहा हूँ, correct, okay restrict, okay rule name like R1 rule 1, apply this rule if the sender is, देखो देख रहे हो कैसे कैसे पेजेस ओपन हो रहा है, the sender is मणिकांत, if the sender is मणिकांत, okay sender अगर मणिकांत हो, क्या करो, forward the message for approval to reject the message with receiver, तो अगर मणिकांत किसी को मेल सेंड कर रहा है, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में आप रूल्स बना सकते हो कि इफ मणिकांत इज सेंडिंग अ मेल टू समवन दिस विल हैपन, ये चीज हो, राइट, तो आप पॉलिसीज बना सकते हो, राइट ना, लाइक ओके मैं एक कस्टम पॉलिसी बना के दिखाता हूँ, रूल्स यू कैन क्रिएट रूल्स फॉर अ यूजर्स, कि ऐसा हो तो ऐसा हो, लाइक दैट, कि अगर यूजर्स कोई मेल सेंड कर रहा है तो ऐसा हो जाए, लाइक देखो लाइक ओके और भी ऑप्शंस है, फिल्टर मैसेज बाय साइज, ठीक है, नेम, मैसेज साइज रूल 1, apply this rule if the size is greater than or equal to, okay देखो यहाँ पे, okay मैं क्या कर रहा हूँ, okay I'm creating a rule that
if user is sending an email to anyone or user is receiving an email from anyone, करेक्ट, अगर मैसेज साइज इससे ज्यादा हो, ओके मैंने 10 MB कर दिया, राइट, आई गिवन फॉर 10 MB, करेक्ट, ओके, कैरेक्टर सेट नेम इंक्लूड विद एनी वर्ड्स, ओके, इस साइज इज ग्रेटर देन, एड कंडीशन, अगर साइज किससे ज्यादा हो, इस साइज इज ग्रेटर देन, ओके, द सेंडर इज अ मणिकांत, ओके, अगर मणिकांत कोई मेल को सेंड कर रहा किसी को, राइट, और साइज ज्यादा हो, तो क्या करो, फॉरवर्ड अ मैसेज फॉर अप्रूवल, मैंने बाय डिफॉल्ट किया है कितना, 10 MB, राइट ना, बट स्पेशल केस हो सकता है ना, लाइक मणिकांत इज सेंडिंग अ मेल टू समवन व्हिच इज 12 MB, करेक्ट, तो मणिकांत क्या मुझे कॉल करे, नो, आई वांट, if Manikant is sending a mail to anyone more than the size, right, more than the, okay, how many size, more than 1024 MB, अगर 10 MB से ज्यादा मैसेज अगर मणिकांत किसी को सेंड कर रहा है, राइट ना, so that one things will be, okay, that one things will be forward for approval, वो अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड अप्रूवल फॉर these people, which people, to the Tarun as an admin, देख रहे हो, you can add exception, आप exception ऐड कर सकते हो, सेम, तो ये रूल बन रहा है ना, 10 MB तक मैंने सेट कर दिया, राइट, बट केसेस हो सकते हैं ना, रेयर केसेस, तो मैं चाहता हूं कि अगर मणिकांत 10 MB से ज्यादा मेल किसी को सेंड कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए मेरे पास आए, वो मुझे कॉल ना करे, और मैं अप्रूव करूं तो वो मेरे सेंड हो, इट्स वेरी सिक्योर ना, जो ओके, तो बहुत ओके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, बन गया ये रूल, देख रहे हो, आप चेक कर सकते हो तो इस रूल के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड दिस रूल, इस रूल के अंदर यहाँ पे चेक कर सकते हो, इफ द मैसेज रिसीव्ड, ओके ओके, यहाँ पे रूल है रिसीव्ड का, इफ द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम मणिकांत एंड द मैसेज साइज इज larger than or equal to 10 MB, so forward this message to this mail ID, देख रहे हो, ओके, रिसीविंग का ही सेंड तो नहीं कर पाएगा मणिकांत, राइट, मैक्सिमम साइज मैंने सेट कर दी, बट इवन, ओके, इट्स अ पॉसिबिलिटी ना दैट स्पैम मैसेजेस, बिकॉज मेल में क्या होता है, ओके, देयर इज अ DDoS अटैक, मेल के थ्रू भी होता है, DOS अटैक, ओके ओके, DDoS अटैक, डेटा डिक्रिप्शन, डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है, तो ऐसे रूल्स हम अपन क्रिएट कर सकते हैं, राइट, और भी, ओके, और भी रूल्स देख लो, डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन, और भी रूल्स देख लो, रूल्स, receive message by sender or recipients, send message, okay, I'm create a new rule, okay, मैं एक न्यू रूल बना रहा हूँ, तो क्या रूल बनाना हो, देखना, रूल लाइक R1, apply this rule if the sender is okay located, अगर कोई यूजर मेल को सेंड कर रहे, if the sender is located outside organization, अगर कोई सेंडर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मेल को सेंड कर रहा है, राइट, सो फॉरवर्ड द मैसेज फॉर अप्रूवल टू तरुण, वो अप्रूवल के लिए भी तरुण के पास है, टेस्ट विद पॉलिसी टिप्स, आप टेस्ट कर सकते हो, क्लिक ऑन सेव, अगर कोई सेंडर, कोई भी सेंडर, राइट, कंपनी के बाहर से मेल सेंड कर रहा है, ऐसे ऐसे रूल्स बना सकते हैं, बहुत सारे रूल्स, ओके, लॉट ऑफ रूल्स इज प्रेजेंट, मतलब ये समझ लो जितना भी आप सोच सकते हो अपने माइंड में, हाउ मच यू कैन थिंक इन योर माइंड, उतने रूल्स बना सकते हो, ओके, इफ द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, अगर यूजर ने किसी मैसेज को रिसीव किया, ओके, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मैसेज पहले ही तरुण के पास पहुंचे, है ना, बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे, लॉट ऑफ रूल्स आर प्रेजेंट, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप सोच सकते हो ना, हाउ मच यू कैन थिंक दैट मच ऑफ रूल्स, कि यूजर्स अगर कंपनी के बाहर हो, ये हो वो हो, जैसा आपको चाहिए, बाईपास हो, फिर स्पैम मैसेज बाईपास हो जाए, राइट, ओके, आप रूल्स क्रिएट कर, रिमोट डोमेन्स, ओके, आप कोई रिमोट डोमेन ऐड कर सकते, बाय डिफॉल्ट एक ही डोमेन होगा ना, बट
you can add some other domains as well. Okay. Accepted domains, by default your domain accepted, right? कनेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कनेक्टर्स अगर बहुत एडवांस में चला जाता है, राइट, क्योंकि कनेक्टर्स होता है लाइक कनेक्टर बिटवीन टू डिफरेंट ऑफिस 365 अकाउंट। ऐसा ओके ओके देयर इज अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, ओके ओके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग टू डिफरेंट मेल अकाउंट एज एन एडमिन, दो अलग अलग एडमिन है, दोनों के पास अलग अलग अकाउंट्स है। वन एडमिन इज हैंडलिंग 3-4 डिपार्टमेंट, अनदर admin is handling 3-4 different departments. So in this condition, between two different admin ID, you can set a connectors. Correct. Okay, alerts आप alerts create कर सकते, you can okay in alerts policy, देख रहे हो alerts का policy बना, right? Okay, okay, which kind of alert policy? You can click on new alert policy, policy name like P1. Okay. Select a severity, high severity, means high impact. Trigger an alert when the following inside is generated. alert कब हो? जब कोई मैसेज लूप में आ रहा हो। लूप मतलब यू नो ना, स्पैम मैसेज लूप में होता है, राइट? लाइक फ्लिपकार्ट, अगर ओके इफ यू हैव सब्सक्राइब टू द फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न, यू आर गेटिंग अ मैसेज इन अ स्पैम ना, करेक्ट? सो आई वांट दैट अगर कोई मैसेज लूप वाला है, राइट, इफ एनीवन इन माय कंपनी, मेरे कंपनी में किसी बंदे को अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा हो लाइक ओके इन माय ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 500 यूजर्स, तो सबके पास एक तरह का मैसेज आ रहा है, समझ रहे हो? for any spam message, any kind of unauthorized activities message. So क्या हो? Send email notification to mail ID. किस मेल आईडी भेजे? कितना हो? नो लिमिट, ओके, कोई लिमिट नहीं। क्रिएट, okay, यहाँ एरर आ रहा है बिकॉज दिस इज अ फ्री ट्रायल वेबसाइट, तो आप फ्री ट्रायल में इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते, हम एरर सेट कर सकते हैं। लाइक ओके लाइक आप एरर सेट कर सकते, लाइक होता है ना, पीपल्स आर फॉरवर्डिंग अ मैसेज, जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना, okay, someone has forwarded and used to do, okay, you are forwarding to someone. So mail में भी होता है like this. The mail also this is happening, that if any user got a mail from anyone for any offers, like Amazon is giving 1,000 rupees off on jeans, okay, these jeans. ऐसा आता है ना एक hackings, you can say okay we are calling it food printing. Cyber security में concept of food printing, okay, in a okay thicker hacking, food printing, active food printing and passive food printing. Food printing मतलब like I know that मणिकांत like sweets, मुझे पता है कि मणिकांत को स्वीट्स पसंद है, so I will create a ad, मैं एक ऐसा ad और लिंक क्रिएट करूंगा, फेक लिंक, okay, and I will send to मणिकांत that find 1,000 rupees off on 5 kg of gulab jamun, okay, 5 kg of gulab jamun cost is 3,000, 1,000 rupees off means 2,000 rupees, मणिकांत is getting 5 kilo gulab jamun. So ऐसे तरह के एक्टिविटीज होते हैं, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ साइबर अटैक सिस्टम कहते हैं। तो आप ऐसे आप अलर्ट सेट कर सकते हैं कि अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड होकर के आ रहा है लॉट ऑफ टाइम्स, 2-3 बार, करेक्ट, like Sumit has forwarded a message to Satish has forwarded to Prince has forwarded to Manikant, so ऐसे मैसेज ब्लॉक हो जाए। सर तो इट्स लाइक ए स्पैम मैसेज, राइट? स्पैम होता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली स्पैम ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आउटसाइड पीपल्स, जैसे कि ओके साइबर सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट है सेट टूल किट, साइबर सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट है सेट टूल किट, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, जिसके थ्रू क्या होता है सोशल एक्टिविटीज के थ्रू अटैक किया जाता है, लाइक ओके फेक इंस्टाग्राम पेज बना करके, राइट, ओके आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, उसके बाद पासवर्ड आईडी पहुंच गया। तो ऐसा काम ना हो, कोई स्पैम मैसेज फॉरवर्ड ना हो, आप अलर्ट्स बना सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो आपके पास अलर्ट्स आए एज एन एडमिन, है ना? बाकी देखो, देन रोल्स, ओके, आप रोल्स वही है एडमिन रोल्स, आप किसी एडमिन का रोल देना चाहते हो, यू कैन गिव
एक्सचेंजर को आप किसी आपको किसी को एक्सचेंज एडमिन का रोल देना है, जो दैट वी सीन है ना, यहाँ देखा था हमने। ओके, इफ यू वांट टू गिव एनी एक्सचेंज एडमिन रोल, आप देख सकते हो, है ना। हेल्प डेस्क एडमिन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एडमिन, फिर है माइग्रेशन। यू आर सीइंग मोबाइल, अब देखो मोबाइल एक्स, यू नो ना। इंट्यून, इंट्यून का मैं आपको कल बताऊंगा। दिस इज अ नॉर्मल मोबाइल एक्स। ये क्या होता है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, फिर बताऊंगा। ओके, हमें अब देखो, व्हाट वी हैव राइट नाउ, मोबाइल। तो मोबाइल डिवाइस एक्सेस, यहाँ पे क्या है, हेयर व्हाट वी हैव, you can create a rules like this user can, okay, use their mail id from this mobile phone only, कि वो इस मोबाइल फोन से अपने मेल आईडी को यूज कर सके। इफ यू वांट टू गिव अ मोबाइल फोन एक्सेस, बेसिकली दिस इज हैपनिंग थ्रू इंट्यून, ये हम पढ़ेंगे इंट्यून में। अभी क्या होगा, ये आपके लिए थोड़ा, इट विल बी नॉट इजी फॉर यू राइट नाउ टू अंडरस्टैंड द मोबाइल मेल बॉक्स पॉलिसी। Basically, some companies are giving a permission to their users to use mail ID in a mobile phone. Some company not. आपने देखा होगा कि आप अपने मेल आईडी को अगर मोबाइल फोन में कॉन्फ़िगर करते हो ना, इनसाइड आउटलुक एप्लीकेशन इन मोबाइल फोन, आपको एरर मिलता होगा। मे बी यू हैड सीन दिस थिंग, एंड मे बी यू आर एबल टू गेट एक्सेस, मे बी आपको एक्सेस मिल जाता हो। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो लाइक, ओके, लाइक डिवाइस एक्सेस रूल, आप रूल्स बना सकते हो। विच काइंड ऑफ रूल्स, डिवाइस फैमिली, ऑल फैमिलीज allow this model, okay, you can allow a model, okay. Okay, basically we are not getting this option because of it's a free trial account, otherwise you can set, okay, आप सेट कर सकते हो कि okay, user can only access their mail id in a iPhone, correct, because Android is not safe ना, you know। सब ऐसे ऐसे चीजें क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ रूल फॉर अ डिवाइस फैमिली और अ स्पेसिफिक मॉडल। to select model, select the device family first, all family, यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा बिकॉज इंट्यून यहाँ पे इनबिल्ट नहीं। Intune, okay, what is Intune? We'll discuss tomorrow. Intune is a device management concept, कंप्यूटर और डिवाइस को मैनेजमेंट करने का कॉन्सेप्ट है Intune, ओके। इट्स नॉट वेरी ओल्डर कॉन्सेप्ट, बहुत ओके, बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है Intune का। ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग, टुमारो आई विल टीच अबाउट Intune। सो मोबाइल और डिवाइस मैनेजमेंट हम कल देखें, राइट। एक्सेंज में दिया हुआ ये कोई इज प्रेजेंट ऑन एक्सेंज, बट जनरली यू कांट मैनेज इट अंटिल Intune इज नॉट इनबिल्ट, जब तक Intune इनबिल्ट नहीं। Intune क्या होता है कल बताऊंगा, okay, you can, okay, reports, reports वही है, like, okay, you want like
message report for inbound message report, okay, outbound message okay report, है ना, like in a message thread, जो मैसेज ट्रेस में सेम चीज है यहाँ पे, करेक्ट, ओके, नो डेटा अवेलेबल, राइट। अगर आपको बस रिसीविंग सेंडिंग का देखना है रिपोर्ट, यू कैन से का रिपोर्ट, इनसाइट मीन्स मॉनिटर, अब मॉनिटर कर सकते हो, ओके, व्हाट टू इनसाइट, क्या इनसाइट करना है, ठीक, यहाँ पे बन के आएगा कुछ, इनसाइट मीन्स मॉनिटर, आप देख सकते हो लाइक व्हाट इज गोइंग इन कंपनी, की कंपनी में क्या क्या मॉनिटर चल रहा है, राइट, ओके, यहाँ पे ओके, हियर इट विल कम ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ओके ऑटोमेटिक बन के आता है, करेक्ट, ओके, लाइक ओके व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कौन किसे मेल भेज रहा है, आप देख पा रहे हो ऑनलाइन, यू कैन व्यू इट हेयर कि क्या किसे कौन मेल भेज रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, व्हाट इज द फॉरवर्डेड मैसेज, पूरा बन के आता है। एक्चुअली दिस इज अ न्यू आईडी, राइट, ये आईडी मैंने क्रिएटेड बिफोर 1 or 2 hours ago, तो यहाँ पे ये ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं दे रहा, राइट, इट्स नॉट गिविंग मी अ लॉट ऑफ ऑप्शन, अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ बन के आता है कि आप ऑनलाइन देख सकते हो, इफ यू वांट टू डाउनलोड अ रिपोर्ट, यू कैन डाउनलोड अ रिपोर्ट एज वेल एज, और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ बन के आता है, लाइक ओके व्हाट द ओके सेंडिंग रिपोर्ट, रिसीविंग रिपोर्ट, है ना, ये सब बन के आता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, सो ओके वही शेयरिंग का है, सेम शेयरिंग परमिशन, ओके, क्या आप किसी शेयरिंग परमिशन देना चाहते हो, तो पब्लिक फोल्डर, यू कैन गेट अ फोल्डर पब्लिकली, आप एक पब्लिक फोल्डर बना दो, वेयर, देखिए यू कैन गेट अ पब्लिक मेल आईडी, जहाँ पे कोई किसी को मेल भेज सके, राइट ना, ओके, सेटिंग्स, ओके, कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे, लाइक ओके व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू नॉट सी, ओके, अदर फीचर्स, और भी क्या क्या फीचर्स है यार, अब देखो, एक्सचेंज सर्वर हैविंग अ फीचर्स ऑफ डीएलपी, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वांट मालवेयर फिल्टर, इस देखो यहाँ पे देख रहे हो, मालवेयर फिल्टर, स्पैम फिल्टर, आप फिल्टर्स लगा सकते हो, है ना, मोबाइल डिवाइस एक्सेस आपको, ओके, मोबाइल डिवाइस का एक्सेस आपको ये करना है, हाइब्रिड सेटअप, बहुत सारे ऑप्शन है, सेफ लिंक, लाइक ओके मैं आपको दिखा रहा हूँ डीएलपी, डेटा लॉस प्रिवेंशन का, डीएलपी एक्चुअली इसका पार्ट है, डीएलपी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, अगर आप जाओगे ना सिक्योर, ओके कंप्लाइंस ना, कंप्लाइंस में जाओगे, ओके ऑन ऑफिस में कंप्लाइंस ऑप्शन, आपको दिखेगा कि आप डेटा लॉस की प्रिवेंशन को कैसे कर सकते हो। एक्सचेंज सर्वर में सबसे बड़ा फीचर क्या है, डीएलपी का है, डेटा लीकेज प्रिवेंशन, डेटा लॉस प्रिवेंशन, कि डेटा लॉस ना हो, उसके लिए आप क्या क्या प्रिवेंशन स्टेप्स उठा सकते हो, है ना, देख रहे हो, येट टू बी डिसाइडेड, ऑडिटिंग, डेटा लॉस, ओके प्रिवेंशन, करेक्ट, देखो, ओके दिस इज अ कंप्लाइंस ऑप्शन, कंप्लाइंस ऑप्शन है ऑफिस 365, जहां पे आप ओके रिस्क मैनेजमेंट, देख रहे हो, कंप्लाइंस मैनेजर, परमिशन, यहाँ पे आप अलर्ट कर ओके कर सकते हो, सेट, बहुत ऑप्शंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस, ऑफिस इज वेरी डीपली, बहुत डीपली है ये, कंप्लाइंस बेसिकली ओके सिंग ना, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, प्राइवेसी रिस्क, ओके रिस्क मैनेजमेंट, डाटा, ओके इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, आपको ओके इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, करेक्ट, यू कैन ओके प्रोटेक्ट फ्रॉम हियर, you can get a rules, turn on, right, okay, compliance manager, okay, you can get a error, okay, ये एक okay अलग टाइप का errors है, correct, reports, okay reports सेम ही होगा, okay reports will be same, right, permissions, permissions का ऑप्शन है, देख रहे हो, एजोर एडी परमिशन, आपको एजोर एडी का कोई परमिशन देना है, एजोर एडी विल ऑल्सो डिस्कस ऑन टुमारो, कल देखेंगे हम ऑफिस 65 के साथ एजोर एडी, ई डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉनिक ओके डिस्कवर करना, डेटा लॉस प्रिवेंशन, अब देखो डेटा ओके ओके डेटा लॉस प्रिवेंशन में यू कैन क्रिएट पॉलिसीज, आप पॉलिसीज बना सकते ताकि डेटा लॉस ना हो, ओके क्रिएट पॉलिसी, थिंग, डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल यू कैन सेट अ पॉलिसी टू मेक श्योर इन्फॉर्मेशन इन ईमेल्स एंड डॉक्स इज नॉट शेयर्ड विद रॉन्ग पीपल, कि कोई इन्फॉर्मेशन को गलत पीपल के साथ शेयर ना हो सके, यू कैन क्रिएट पॉलिसीज, आपको 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 क्या पॉलिसी क्रिएट करना है,
फाइनेंशियल पॉलिसीज, प्राइवेसी, प्राइवेसी में कहाँ क्लिक करना है? ओके, देखो यहाँ पे देख रहे हो, एवरी आईटी, एवरी गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट का अपना एक गवर्नमेंट साइट है प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, देख रहे हो? okay, किस पॉलिसी के लॉ को आपको फॉलो करना है? यूके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, राइट? तो बहुत डीपली है ये चीज, राइट ना? ओके, आई एम ओके, मैं कर रहा हूँ कस्टम पे, ठीक है? आई एम गोइंग कस्टम, कस्टम पॉलिसी, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, कस्टम पॉलिसी 1, ओके ओके, लोकेशन आप दे दो, लाइक यू वांट टू क्रिएट पॉलिसी फॉर एवरीवन ना, फॉर ऑन प्रमाइस, ओके, फॉर एक्सचेंज एवरीथिंग, यस आई वांट फॉर एवरी, ठीक है? क्या करना चाहते हो? क्रिएट और कस्टमाइज एडवांस डीएलपी रूल्स, क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे रूल बनाओ, क्या रूल बनाना चाहते हो? नेम इज R1, रूल इज we will apply to the rule if we will apply this policy to content that matches this condition, अगर वो इस कंडीशन को मैच करे। कंटेंट is sealed from Office 65 और contains okay. अब बहुत सारे, okay, you can create a default rules, okay, sensitive information types, कि आप किस तरह का ओके ओके इंफॉर्मेशन टाइप सेंसिटिव मानते हो, ठीक? माइक्रोसॉफ्ट इज गिविंग यू लॉट ऑफ ऑप्शंस, करेक्ट? देख रहे हो? sensitive information you can protect, okay, like something US, okay, passport number, driver license number, okay, debit card number, okay, okay, debit card number, okay, okay, is a sensitive information, okay, high confidence, action, क्या actions हो? Restrict user, restrict access to, okay, restrict access or encrypt the content in Office 65 location, turn on, अब ऑन कर दो इसका नोटिफिकेशन, like email notification, I mean if any user is sending to someone their debit card number, रहता है ना डेबिट कार्ड नंबर एंड ऑल, मतलब कुछ अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा है किसी को, ओके, एंड एनीवन इज गेटिंग सेंसिटिव ओके इन्फॉर्मेशन, कंपनी के अंदर किसी को अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है रिलेटेड पासपोर्ट मीन जितने भी होते हैं सेंसिटिव चीजें, ओके, आप सिलेक्ट ओके डेबिट कार्ड, आप वो सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, ओके? कस्टमाइज द ईमेल टेक्स्ट, ओके, कि ओके अगर ईमेल टेक्स्ट में कोई लिखा रहा है डेबिट कार्ड, करेक्ट, ओके, लोग लिखा रहा है हैकिंग, लिखा रहा है लाइक पासपोर्ट, अकाउंट में, मतलब अगर ऐसे कुछ नेम से, ऐसा कुछ नाम से अगर किसी को मेल आईडी रिसीव हो रहा, ओके, एंड एनीवन सेंडिंग है, तो कोई किसी को सेंड कर रहा, करेक्ट, तो वो क्या हो? ओके, यूज ईमेल इंसिडेंट, ओके, ऑटोमेटिक एक इंसिडेंट रिपोर्ट बन जाए, सेव, देख रहे हो? सो यू कैन सेट अ डेटा लीकेज प्रिवेंशन पॉलिसी, कि डेटा किसी भी हाल में लीक ना हो, ये देखो, ओके, एक पॉलिसी बन गया यहाँ पे, और पॉलिसी कस्टम पॉलिसी 1, इसके अंदर क्या है? इस पॉलिसी के अंदर टेस्ट विद नोटिफिकेशन, ओके, इनसाइड दिस पॉलिसी, एरर्स, ओके, यू कैन क्रिएट एरर्स, एरर्स, ओके, क्रिएट कर सकते हो, एंड पॉइंट डीएलपी, राइट ना? ओके, लाइक आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो, लाइक इफ यूजर इज यूजिंग, ओके, अनअलाउड ब्लूटूथ ऐप, बहुत सारे ऑप्शन है, ब्राउजर ब्राउज एंड टर्म एंड रेस्ट्रिक्शन टू सेंसिटिव डेटा, आप यहाँ पे ओके ये दे सकते हो कि द यूजर कैन नॉट यूज एनी एप्लीकेशन, अगर कोई यूजर किसी को मेल भेज रहा है बाय यूजिंग इनकॉग्निटो मोड, है ना? आप ओके यहाँ अब ये ओके लाइक आई एम गिविंग, इफ यूजर इज सेंडिंग अ इंफॉर्मेशन टू एनीवन यूजिंग फायरफॉक्स ब्राउजर,
यूजिंग गूगल क्रोम, यूजिंग दिस ऑल। ओके, मैं यहाँ पे ओके सब कुछ का नाम दे दे रहा हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्स ये नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है। अगर कोई यूजर गूगल क्रोम के यूज करके, ओके व्हेन यूजर इज यूजिंग गूगल क्रोम, ओके एंड सेंडिंग अ मेल टू एनीवन, करेक्ट, गूगल क्रोम पे अगर वो लिखे outlook.com तो मेल सेंड कर सकता है ना, राइट। अगर कोई यूजर इस एक्सटेंशन को यूज करके किसी को मेल भेज रहा है, तो व्हाट विल हैपन, क्या हो, द मेल विल नॉट सेंड, ओके मेल सेंड ही नाउ। बाय डिफॉल्ट कंपनीज अलाउंग, बाय डिफॉल्ट ओके कंपनी क्या अलाउ करती है, माइक्रोसॉफ्ट एज, बाकी सब ब्राउजर को आप डिनाई कर दो। देख रहे हो, राइट ना, कि माइक्रोसॉफ्ट एज सिक्योर है ना, इट्स सिक्योर बिकॉज इट्स माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, है ना। तो लॉट ऑफ बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब हाउ मीन्स आपको जैसे ओके प्रोटेक्ट करना, यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम अ कंप्लाइंस ऑप्शन। जो कंप्लाइंस का ऑप्शन है, आप इससे डेटा लीकेज प्रिवेंशन, उस पे एडल्ट, आप सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी टैब में क्या है, इनसाइड सिक्योरिटी टैब, राइट ना। सो याद रखना, डीएलपी डेटा लीकेज प्रिवेंशन इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ ऑफिस 365, ठीक है। डेटा लीक का जो प्रिवेंशन होता है, ये भी इसका फीचर है। ओके सिंह, ओके ओके, इंसिडेंट एंड अलर्ट्स, ईमेल एंड कोलैबोरेशन अलर्ट्स, आप अलर्ट्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सी द अलर्ट्स, ओके कोई अलर्ट्स आ रहा है, लाइक ओके यू क्रिएटेड ऑन अ एक्सचेंज सर्वर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या अलर्ट्स है। व्हाट इज द हेल्थ, क्या हेल्थ है, ओके सर्विस हेल्थ और मैसेज सेंटर, ओके मैसेज सेंटर का क्या हेल्थ है, लाइक कोई हु आर सेंडिंग अ मेल टू विच पर्सन, मतलब इन शॉर्ट देख रहे हो हाउ मच ऑप्शन, कितने ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, इनबॉक्स का क्या सीन है, राइट, हाउ मच मैसेज इन आर्कीव, क्या मैसेज आर्कीव पे है, नथिंग इज एन आर्कीव, राइट, किसने क्या आर्कीव पे रखा है आपने, सर्विस हेल्थ क्या है। सो लॉट ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन, कंडीशन व्हाट यू विल यूज, करेक्ट। सो वी हैव अ एज्योर एडी और इंट्यून। ओके एज्योर एडी कैसे यूज करना होता है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एज्योर एडी विथ ऑफिस 365 सेम ही होता है, एज्योर एडी ऑन अ एज्योर ऑन ऑफिस 365 के दोनों का सेम ही काम, लाइक एमएफए वगैरह जो देते हैं ना, एज्योर एडी के थ्रू देते हैं। प्लस इंट्यून का क्या होता है, इंट्यून बेसिक्स यूज, ओके इंट्यून का, इंट्यून विथ ऑफिस 365, कल के दिन हम ये पढ़ेंगे, टुमारो विल डिस्कस दिस, ओके। ओके। क्योंकि आगे बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अपन अभी टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, लाइक कंप्लाइंस वगैरह देख रहे हो ना, मतलब आपको याद रखना है कि अगर इफ यू वांट टू सिक्योर, अगर आपको सिक्योर करना है, ओके लाइक डेटा लीक प्रिवेंशन, कोई ओके सिक्योरिटी एरर्स आपको सेट करनी है, यू कैन सेट थ्रू कंप्लाइंस, ठीक है। तरुण सर, एक एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी डीएलपी डेटा लीकेज प्रिवेंशन के बारे में आपने बताया, हम्म, जो कि जनरली हम लोग जब कोई मशीन प्रिपेयर करते हैं तो डीएलपी डालते हैं, क्योंकि जिससे कि अगर कोई डेटा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, लाइक कोई डिजिटल डेटा, लाइक कोई अटैचमेंट या कुछ, तो वो हम्म, उसके रिगार्डिंग वो अलर्ट भेजता है कि हाँ हाँ ये डेटा हाँ यहाँ से बाहर गया है। हाँ, अलर्ट भेजता है, आप मेल आईडी पे भेजेगा अलर्ट, ठीक है। तो हम्म। आप उससे पूछ सकते हो भैया आपने क्या भेजा, क्यों भेजा, यू कैन टेक एक्शन ना, यस यस। यू कैन टेक, अदरवाइज द मैनेजमेंट टीम कैन टेक एक्शन। कोई एक्चुअली सर एक बार मुझ पे हो चुका है एक्शन, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ नहीं, तो ये सब फीचर्स हैं, कोई बच नहीं सकता है, हाँ, एक्चुअली एनीवन। टेस्टिंग के लिए मैंने मंगवाया था, बट मेल आ गई कि आपने क्यों मंगवाया ये रजिस्टर डेटा अपने मेल हाँ पे, नहीं, क्योंकि पर्सनल आपने मेल। परमिशन नहीं लिया होगा, हम्म। आपने परमिशन लिया नहीं होगा, और आपने सोचा चलो कोई नहीं टेस्ट कर लेते हैं, होता है कि नहीं, हाँ। है ना, उस चक्कर में हो गया सब कुछ। तो इसलिए बहुत सिक्योरिटी के साथ काम करना होता है ऑफिस 365 के अंदर, क्योंकि आप एडमिन हो लेकिन बहुत सारा चीज आपको सेट करना होता है, लेकिन देखना नहीं होता है, हम्म। सही बात। ठीक है। तो ये बेसिक्स था, और कल के दिन हम देख लेंगे ओके एज्योर एडी विद ऑफिस 365 एंड एंट्यून।
with Office 365. Okay. फिर बाकी नेक्स्ट Okay. वीक में ओके बेसिक डेटा ओके देख लेंगे एसक्यूएल का लाइक एजूर विद एसक्यूएल as you are okay requesting for database basic, and then next Sunday will be okay project का okay थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे. Okay. Okay. Okay guys, so any questions, anyone, any doubts, anyone? Not now. No, It's sir. all clear. Okay guys, so we'll meet on tomorrow and we'll complete our Office 65 discussion. Okay, on tomorrow's session. Okay, sir. Okay, thank you so much. Bye bye, take care. Yeah. Bye, sir. Bye. Good night. Bye, sir. Good night. Bye guys, good night.